Hello, Judiciary Aspirants. A very important verdict is on the way that could affect all of us, that could change the way we plan our careers. But before we start panicking, let's cut through the noise and get to the facts. Currently, social media is flooded with clickbait content and the descriptions that can misguide you. Don't fall for rumors. Let's understand what is going on and let's understand what we can do in the meantime. So, first things first, currently the Supreme Court verdict is not out, the judgment is reserved, and there is a likelihood that it will be decided, it will be taken up again in the first or second week of April. So, remain steady and I'm requesting you again, don't fall for rumors. We will see what the verdict will be and we will try to figure out what we can do best in the given circumstances. Till the time verdict is out, nothing has changed. So we should also not change. We can only plan and try to adapt our minds accordingly. So what we should do in the meantime? In the previous video also, I've requested all of you to do the same, but I will repeat myself this time with a few examples and we'll try to understand what we can do. We all are in the same boat. So first thing is just stay away from the clickbait content. These things can have a psychological impact on you before you even understand. आप क्लिक बेट कंटेंट से थोड़ा दूर रहिए ऑफिशियल चैनल्स को ऑफिशियल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करिए राइट and whenever you see any content which is exaggerating the things, you should be skeptical and immediately confirm it with the official sources, the newspapers or the live law website or the official Supreme Court website or the live hearings, whatever suits you the best, आप उन sources को prefer करिए और थोड़ा सा जो psychologically आपको परेशान कर सकते हैं उस वाली content से दूर रखिए अपने आप को. That is not for you. Second thing is, as judiciary aspirants, we should continue with our studies. आप अपने preparation को continuously चलाते रहिए. Because the reason why I'm telling you this, because even if the rules change, मैंडेटरी प्रैक्टिस होती है नहीं होती है, कितने साल की होती है, कम की होती है, ज्यादा की होती है, अगर ये सब बदल भी गया, कुछ चीजें तो नहीं बदलेंगी. The understanding of the law that you will require for these examinations to qualify will remain same. The answer writing skills that you require to qualify or even get the top rank in these examinations, it will remain the same. The judgment writing, the GK, everything will remain the same. So it is better to continue with our preparations. The third thing that you should do is to adapt yourself, be prepared for any change that might occur. That might occur. There are only two possibilities. राइट, अगेन आई एम सेइंग दिस, या तो वो प्रैक्टिस ईयर्स मैंडेटरी हो जाएंगे या नहीं होंगे. राइट, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. तो जैसी भी पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है, जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं आफ्टर द वर्डिक्ट, वी विल अडैप्ट. इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली राइट नाउ and let's see what the final verdict is. Let's not speculate and overburden ourselves with the irrelevant considerations and irrelevant information at the moment. Whenever the verdict will be out, we will sit again, we will find out a strategy, what can be done, what cannot be done, right? उससे पहले स्पेकुलेट करने से हमको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है. It will be a wastage of time and you must not waste your time. You must dedicate this time to your studies. जितनी देर में आप इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे, स्पेकुलेट करोगे,
ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, उतनी देर में आप 2 से 3 आंसर्स अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, आपको क्या करना है। एंड हेयर लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो आगे चल के बहुत अच्छे फिलोसफर बने, लेकिन जो मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा वो उस टाइम की है जब वो किसी के यहाँ स्लेव थे। बात बहुत पुरानी है। सो व्हेन ही वाज अ स्लेव विद समबडी, he was interested in reading books and comprehending and finding out new things. So एक दिन उनके मास्टर ने उनको पढ़ते हुए पकड़ लिया, और पहले ये टेंडेंसी थी ही कि पढ़ लेगा तो रिबेलियस भी हो सकता है और बाकियों को भी परेशान कर सकता है, इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर द मास्टर्स, राइट। तो क्या किया, मास्टर ने उनको मारना पीटना शुरू किया, और इस एक्सटेंट तक मारा कि थोड़ी देर और पीटते तो उसके जो पैर था वो टूट जाता। एंड ही पॉइंटेड दिस आउट कि मास्टर इफ यू विल कंटिन्यू बीटिंग मी लाइक दिस, मेरा जो पैर है वो टूट जाएगा। बट मास्टर कंटिन्यूड, वो पैर टूट गया। लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया? He continued with his reading, and the moment he gained freedom from slavery, he went on to become one of the most popular philosophers of his time. And even he trained अपने जो बाद के जो उनके जीवन के कुछ कुछ साल थे, he even trained others to train their minds and remain calm in the situations, in the adversities. तो हमारे पास भी वही चॉइस है, या तो हम पैनिक कर लेते हैं, या फिर हम लोग अपने माइंड्स को काम रख करके जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो काम कर लेते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, द पर्सन हु विल रिमेन कंसिस्टेंट विल क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, नो मैटर व्हाट द रूल्स आर। रूल से उतना फर्क हमारी ट्रेजेक्टरी में पड़ सकता है, हमारी प्लानिंग में पड़ सकता है, लेकिन एक चीज, चाहे रूल्स बदलें चाहे ना बदलें, एक चीज जो कॉमन रहेगी वो क्या है, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। So let's do that. Let's not panic. Let's wait for the verdict. We will sit again. We will meet again. We'll see what can be done. Till that time, let's not speculate anything. Let's not spread misinformation. Let's not carry on negativity on our shoulders. And let's just study like a good aspirant. Till that time, let's keep this thing in abeyance. It will be for everybody's benefit. Right? So I request you to do it the way I have, in a way, made you understand, I believe. And if you have understood, just comment fire emoji in the comment box and subscribe us. We will come up with more informative and less clickbait content. Thank you.